August the 15th, 1947, Independence Day for India. In London, the flags of the new Indian Union flutter over the headquarters of India and Pakistan. An era has ended, a new epoch begins. A subcontinent larger than the whole of Europe becomes two self-governing dominions within the British Commonwealth of Nations. After less than a century under the British Crown, India's most crucial hour has struck. Bombay sees a postscript to the Independence Day celebrations as Lord Mountbatten bids farewell to the first British troops to leave India since the transfer of power. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। It's been 70 years since the independence of Pakistan. The British left, ending their 90-year Raj here in the subcontinent. But why is it so that we still see colonial imprints in our economy? Culture. Why is it so? Who is responsible? In search of answers of these questions, we met various professionals to gather their professional opinion. This is Colonial Hangover in Pakistan. Education is the basis of development in any society, and in Pakistan, one thing that has been affected the most by our colonial past is our education system. Be it the disconnection from our national and indigenous languages or our Western curriculum. How has it impacted Pakistan, and what role did it play in the disconnection of our youth from our own culture and our own identity? I think there are two main problems here. The first is the medium of instruction, and the second is the content of instruction. So, when it comes to the medium of instruction, there is no doubt that the British, they come to South Asia, they bring with them the first printing presses that are set up in large parts of South Asia, but the use of that English language is something that comes to be the marker of social ability and elite status. So all the really good jobs are held by people who are fluent in English, all the really good scholarships go to people who are fluent in English, all the really good schools are English medium, and that perpetuates a kind of linguistic class divide in the society. The second issue is of the content. Now, when it comes to the content, what the lessons from other countries are available to us teach us is that when you educate people, if you educate them in languages that they are more familiar with growing up, ideally their mother tongue, but can also be local lingua francas, they are more likely to achieve better educational results. This, of course, requires a very large and effective translation effort in order to ensure that the latest science, the latest knowledge, the latest understanding
that is available not just in English, but in all different major global languages, is also available in your role and your vernacular languages. In the context of Pakistan, what we have done is that we have, of course, perpetuated this class divide inherited from the British rule. And on the other hand, we have also failed to create the kind of content development in the local languages that could eventually allow us to replace English medium-based instruction as globally competitive education. So this is a very grave failure on part of our education policy. आपने निसाब तालीम की बात की या तालीम के हवाले में जो पेशरफ्त हो सकती थी हमारे ख़ित्ते में, हमारे मुल्क में, उसकी बात की, तो आप मुआजना भी करें दूसरे इलाकों से या दूसरे मुल्कों से। मैं दो तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक तो आप कंपैरिजन करें अपने हमसाया मुल्क ईरान में। ईरान में फ़ारसी बोली जाती है और वहाँ पर निसाब तालीम और तहकीक और तालीम साइंस वहाँ भी मौजूद है, लोग पढ़ते हैं और वो फ़ारसी में पढ़ते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है कि दुनिया में जहाँ भी साइंस, टेक्नोलॉजी या किसी भी डिसिप्लिन की कोई नई किताब आती है, वो फ़ौरन ही फ़ारसी में तर्जुमा होकर उनके मुल्क में, उनके निसाब में, उनकी जामियात में पहुँच जाती है। एक तो ये चीज़ नोट करने वाली है। ये वो मामला है जो आपने नहीं किया, आप नहीं कर सके। अच्छा, आप क्यों नहीं कर सके? अब पाकिस्तान में बदकिस्मती से जैसे ही 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, तो एक ख़ास नुक्ता निगाह से एक बहस शुरू हो गई और वो बहस ये थी कि आपकी कौमी ज़बान उर्दू है, जबकि ये इस खित्ते के किसी भी इलाके की ये ज़बान नहीं थी। तो उर्दू जब हमारी कौमी ज़बान बना दी गई और बन गई और लोगों ने इसके साथ मोहब्बत भी की, इसको पाकिस्तान बनाने की वजह भी करार दिया, तो फिर जो ईरान में हुआ वो भी तो करना चाहिए था ना, वो आप नहीं कर सके। तो आपने अपने निसाब तालीम में जो ज़रूरी चीज़ें थीं, जो तर्जमे करने थे, जो निसाब में चीज़ें पढ़ी जानी थीं, वो आपने अंग्रेज़ी में ही जारी रखी ज़्यादातर, ख़ुसूसन साइंस में और टेक्नोलॉजी में। तो इससे एक तफावत पैदा हुआ, एक तफरीक पैदा हुई और ये तफरीक लाकत का बायस बन रही है हमारे लिए भी और हमारे मुस्तकबिल के लिए भी। To rule over thousands of locals, the British adopted a governance policy in which they created a class which, in Lord Macaulay's words, was Indian by race and color, but British by thinking and intellect. Today, we still see a class divide between our institutions and the general public. Can this be attributed back to our colonial roots, or is it our own negligence? Well, देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जिन इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है और बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, दीज इंस्टीट्यूशंस वर एक्चुअली डिज़ाइंड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर मोनार्की, जब वो इंडिया, पाकिस्तान, एक्चुअली इस सब कॉन्टिनेंट को एज मोनार्क्स रूल कर रहे थे। वी यूज टू बी देयर सब्जेक्ट्स। दीज इंस्टीट्यूशंस वर एक्चुअली डिज़ाइंड टू सब्जुगेट द सब्जेक्ट्स, राइट? अब when they left, we were supposed to become democracies, all of these countries I'm talking about. ये institutions जो designed थे, this bureaucracy which we have and other institutions, they were designed to serve a king or a queen or any monarch. जब आप democracy में उन्हीं institutions को without any structural reform use करेंगे, तो remember, they have been very successful in their business, these institutions. So they were already, they became larger than the state itself, because जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की democracy was very weak, but these institutions were very mature, 190 years of age. तो without any structural reform, इन institutions ने वैसे ही काम किया जैसे ये पहले काम करते थे, और उनका काम यही था कि वो subjects को subjugate करें. So, an institution trained to deal with the subjects, he will not understand, I mean that institution will not understand कि citizens से कैसे deal करना है. And that is the same thing which reflects in their conduct today. They are kind of dealing with the subjects
not with the citizens, and that is why you see the whole class difference. Because these institutions or bureaucracy or other institutions, they have become a certain class, and the common people have become a certain class, a lower class. लेकिन एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जब हमारी प्री पार्टीशन भी आप चले जाते हैं ना, जब उस वक्त भी नवाबों वाला एक कल्चर था. आगे वो मसाहिब होते हैं, वो जी हजूरी करते हैं, वो हमारी कुछ खून के अंदर मुझे लगता है सरायत कर चुका है. फ़ौज के अंदर बैटमैन रखना बहुत पसंद किया जाता है. यहाँ हमारे जो बाबूज हैं, उनके आगे चाय वाले 4-6 लोग होते हैं, 10 अफसर होते हैं, 20 उनको चाय पिलाने वाले, एक साहब की फ़ाइल उठा के नीचे तक जाता है. ये वो ब्रिटिश राज की और कॉलोनियल जो आप जिनको कहते हैं ना, ये उसकी निशानी है. साहब अपनी गाड़ी तक खुद नहीं जाता, एक साहब का ब्रीफकेस उठा के आता है, एक साहब का दरवाज़ा खोलता है. तो ये वो निशानियाँ मौजूद हैं और ये अफसोसनाक है. At its inception, Pakistan adopted a lot of liberal values from the British that they tried to inculcate in the subcontinent. But soon after, we saw a rise in an extremist sentiment in the general public. Did those inherited liberal values act as a trigger point for those extremist sentiments, or was it simply used as an evasion by different stakeholders for their personal gains? So the real question is that why did this shift in fact take place? And I think there are two important reasons for it. The first is that although the British did inculcate liberal values and institutions, the values and institutions were basically limited to a very small number of people, and they were not necessarily shared by the society at large. The second thing, of course, is that in both India and in Pakistan, the ruling elites over a long period of time underperformed or failed to deliver. And the frustration from that underperformance and that failure to deliver ultimately increased the need for using identity politics, particularly religious identity politics, to consolidate the vote bank. So there is also a bit of a contradiction in the sense that secular failure of the post-colonial elites leads those post-colonial elites to increasingly rely upon religion in order to remain in power, in order to continue to command the loyalty of the masses. But when those post-colonial elites attempt to use religion in this manner, the results are often an increase in extremism, polarization, violence, and other such things that end up reinforcing the backwardness of the society, and that then again make it more politically productive to use religion and religious symbols in order to keep your vote banks intact. So it kind of creates a negative feedback loop in the political system. ये हमने खुद ही ट्रिगर किए. आपके नज़रियात आपकी शख्सियत को ढालते हैं, और आपके नज़रियात ही आपके माशरे को ढालते हैं, और आपकी सोच ही आपके मुल्क को ढालती है. तो इन अ वे मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि एक्सट्रीमिस्ट नज़रियात में जन्म कहाँ से लेना शुरू किया. मेरी ज़ाती दानिश में तो ये सियासी बाजीगरी जो है उस वक्त ज़्यादा सामने खुलकर सामने आई जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, और उस दौरान जो चपकलिश हुई, जो मामलात हमारे हमसाये में हुए, उसकी बाज़गश्त हमें सुनाई देती है, और उसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ा. जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन ने हमला किया तो सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए आपको दूसरी कौमियतों के लोगों को बुलाना पड़ा उनका मुकाबला करने के लिए, और उनको बुलाने के लिए आपको इस्लाम का और मज़हब का सहारा लेना पड़ा. तो जब आपके माशरे में
इस तरह के नज़रियात में जड़ें पकड़ना शुरू की तो आपका माशरा ढलना शुरू हो गया और आपने वो सारी चीज़ें फरामोश कर दी जो आपकी वैल्यूज़ थी, जो आपकी माशरे की अच्छी सोच के अक्कासी करती थी। Pakistan adopted a lot of its economic policies from the British, be it the delocalization of local industry or the skewed land distribution system, which led to accumulation of wealth in the hands of few individuals. How has it impacted the economical disparities and polarization that we see between different societies across Pakistan? Of course, देखें, आप जब एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप इक्वालिटी या एक्विटी आइडियली कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आपके रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेटेड हो गए इन द हैंड्स ऑफ सम फ्यूडल्स और सम एलिट्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, तो इट वुड नॉट बी अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, राइट? सो विदाउट लैंड रिफॉर्म्स देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि आप या तो कोई अच्छी एग्रीकल्चरल पॉलिसी बिल्ड कर सकें या फिर कोई अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल्ड कर सकें. तो what later happened, those people who had money, they later became the industrial elites, or again concentration of wealth. When we did industrialization, तो concentration of wealth फिर भी वैसी ही रही या उससे भी ज़्यादा burst हो गई. And then we did nationalization, and you know, all of the things which we did, they were done in haste. उसके लिए कोई ख़ास होमवर्क नहीं किया गया. दैट इज़ वाई पब्लिक पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन, व्हेन यू मेक पब्लिक पॉलिसी यू यूज़ डेटा एंड दोज पॉलिसीज शुड बी एविडेंस बेस्ड. सो इफ़ वी गो इन टू द हिस्ट्री एंड वी सी आर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, नेशनलाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दे वर कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ एड. और द करंट गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसके हिसाब से अप्लाई कर रही थी, नॉट वेरी एविडेंस बेस्ड. आज से 30-40 साल पहले कहा जाता था, या आप 70s की कुछ रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको 22 ख़ानदानों का नज़र आएगा जिक्र. डॉक्टर महबूबुल हक ने इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी थी, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा. अब वो 22 ख़ानदान शायद आजकल के दौर में वो कुछ 2000 ख़ानदान हो गए होंगे. तो वो 2000 ख़ानदान पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ लैंड तक नहीं है. लैंड रिफॉर्म भुट्टो दौर में भी की गई थी, नतीजा उसका नहीं निकला. भी बिग लैंडलॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. अंग्रेज़ राज की कई निशानियाँ हैं, जैसे ये मखदूम ऐन हैं हमारे, ये अंग्रेज़ राज के तोहफे हैं हमारे पास. बड़े बड़े खादमीन जो अंग्रेज़ों से मिल जाते थे, उनको मुसलमानों को मारने के लिए भी यही लोग साथ देते थे, लेकिन वो बड़े बड़े मज़ारात को उनके हवाले कर दिए जाते थे, वहाँ से उनको वसाइल भी मिलते जाते थे. किसी निज़ाम के अंदर खूबियाँ और ख़ामियाँ पैदा की जा सकती हैं. वो गैर मुल्की थे, यहाँ आकर काबज़ फोर्स थे, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ताकि यहाँ आबादी को किस तरह कंट्रोल करना है. वो चला गया, लेकिन आज तक हम अपनी इस्लाह नहीं कर सके. हमने तो पढ़ लिख के आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो मेरे से या मैं जो मेरा ग्रुप है उसकी ज़िम्मेदारी थी ना 50, 55, 60 साल वाले लोगों की, कि हम पाकिस्तान को अब सीधी राह पे डालते हैं. मैं तो पैदा भी इसी सरज़मीन पे हुआ ना, आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ. मेरे ऊपर तो अंग्रेज़ राज का असर नहीं था, लेकिन हम वो इस्लाह वाला निज़ाम मुतारफ़ ही नहीं करा पाए. हमारे अंदर वो जो एक नाम मेरिट वाली चीज़ हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, सबसे बड़ी. दूसरा ख़राबी जो है प्रोफेशनलिज्म की कमी. दो चीज़ों ने हमें मार छोड़ा है. हमें इस राह के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको मिल के कोशिश करनी पड़ेगी. अपनी इस्लाह, अपना काम ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी. मेरा काम यह है कि मैं जिस अदारे ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसको 100% ठीक करने की कोशिश करूँ. हम उंगलियाँ बाकी सारों की तरफ उठा देते हैं, लेकिन जो अपनी तरफ उठनी चाहिए उसकी तरफ तो जो नहीं करते, ये सबसे बड़ी खराबी है. As we envision a future liberated from the shadows of our colonial past, what steps must we take, both individually and collectively, to dismantle the enduring structures of colonial influence and build a society in which each and every individual is proud to be a Pakistani? It's the most difficult part. जवाब आपके सवाल में मौजूद है. आप अपनी मांगें
माजी के हाथ से छुड़ाएं और मुस्तकबिल की तरफ रवाना करें। मुस्तकबिल में देखें, पेशबीनी से काम लें कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं। आप 230 मिलियन की आबादी का मुल्क हैं। 230 मिलियन की आबादी का मुल्क जिसका 65% नौजवान है, 25 साल से कम उम्र है। आप पेशबीनी से काम लेके अपने आप से पूछें कि 20 साल के बाद ये 100 मिलियन के जो लोग हैं जो 25 साल की उम्र के हैं, ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इस सवाल के जवाब आपको कोई कॉलोनियल मास्टर नहीं देगा, तो आपको कोई हमसाया नहीं देगा। ये सवाल आपने खुद अपने आप से करना है, उसका जवाब भी तलाश करना है। मुगलों ने यहाँ बहुत तवील अरसा हुकूमत यहाँ की है, तो अगर आप ब्रिटिश राज के ऊपर सारी बुराइयाँ ढूंढ रहे हैं तो फिर उस मुगल दौर से भी सारी बुराइयाँ ढूंढें। कुछ जो भी आप पे काबज़ आएगा वो अपनी कुछ चीज़ें आपके अंदर मुतारफ़ करवाएगा। अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था तो कुछ अंग्रेज़ जाते जाते हमें अपनी वो पेंट और शर्ट वो हमें दे गए, हम पहन लेते हैं। वो ना यहाँ होते तो शायद अगर कोई अरबी काबज़ हो जाता तो हम लंबे लंबे वो जुब्बा पहन के फिर रहे होते। तो जो काबज़ फोर्स हो उसकी कुछ चीज़ें मुकामी आबादियाँ अडॉप्ट कर लेती हैं, लेकिन उसको तो 1947 में गए हुए भी अब 75-76-77 साल हो गए, अब उससे आगे चलना चाहिए। सो द colonialism in Pakistan has given rise to majoritarianism. It has given rise to a cultural divide and a class divide. Now we have a very specific class which is very good with Western knowledge and Western languages and Western culture and Western cinema, and that elite class actually thinks that they have the right to rule the country. That needs to unpack. A lot of what we understand about Pakistan is that it is an underdeveloped and maladministered country. This underdevelopment and maladministration has origins in both our colonial and our pre-colonial history. If Pakistan is to transcend these problems, it needs to understand that history without getting trapped by that particular episode of colonial rule. आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।